today we are topic now start nutritional requirement of the bacteria. बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको अपील करना चाहती हूँ कि हमारे देश पर बहुत बड़ी आपत्ति आई है, तो आप सभी लोग घर में ही रहे और पढ़ाई करिए। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बैक्टीरिया, 8 प्रकार के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बैक्टीरिया है। सोर्स ऑफ एनर्जी, सुटेबल इनेक्टेड ड्रॉन, सुटेबल कार्बन सोर्स, सुटेबल सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन, सल्फर्स एंड फॉस्फोरस, मेटल साइंस, विटामिन्स लाइक स्ट्रक्चर्स एंड फॉर waters. First, requirement for the source of energy. Energy is required by microorganism to carry out biosynthetic and other process. The energy is required in the form of ATP. ATP मतलब adenosine triphosphate और other such energy rich compounds, जिसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है, इसको बोलते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स. दिस इज नोन एज अ बायोकेमिकल्स एनर्जी. Various type of energy source can be utilized by microorganisms depending on the type of organisms. बहुत सी सारी एनर्जी यूटिलाइज होती है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती है, लेकिन डिपेंड्स होता है उनके ऑर्गेनिजम्स पर. फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर रेडिएंट एनर्जी. अगेन 1 मार्क्स क्वेश्चंस. while the chemotrophic organisms are use chemical energy. इंटरनल एग्जाम्स में ये दोनों एग्जाम्पल्स 1 मार्क्स में आ सकते हैं. ये फोटोट्रॉफिक एनर्जी वो रेडिएंट एनर्जी यूज करता है और chemotrophic organisms is a chemical energy यूज करता है. Next, requirement for suitable electrons donor. During the biosynthesis, several reactions leading to reductions take place in cells. They require as a ability of reducing powers, NADPH. Again 1 marks questions आपको पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोर में जो reducing power कौन से यूज होते हैं. The reducing power NADH and NADPH is generated in a cells. ये पावर है वो सेल्स में से जनरेट होता है. ऑक्सीडेशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रॉन डोनर. ऑर्गेनिजम्स कैन यूज आइदर द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. और जो ऑर्गेनिजम्स है वो दो प्रकार के सब्सटेंस यूज करते हैं, either a organic either a inorganics as and the electrons donor. The organisms which use an inorganic substance as an electron donor are said the lithotropes. Again 1 marks questions. Those while use the organic compounds as an electron donor are termed as a organotropes. आप दोनों की डेफिनेशन भी पूछा सकती है और 1 मार्क्स में भी पूछा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनर कौन करता है. Next, requirement for suitable carbon source. The cellular material of microorganisms is made of carbon skeleton. This carbon skeleton is synthesized from a suitable source of the carbon. Autotrophic organism are as a organic carbon CO2. Why? Again 1 marks questions. Autotrophic organisms a organic and कार्बन का यूज करते हैं और हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स है यूज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज द ग्लूकोज एंड कार्बन सोर्स. दोनों में फ़र्क इतना है कि वो कार्बन सोर्स का यूज तो करते हैं, लेकिन हेट्रोट्रोफ है ग्लूकोज का करते हैं और ऑटोट्रोफ है CO2 को करता है. नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट फॉर अ सुटेबल सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन्स. Various important molecules of the cell such as the protein, nucleic acids, vitamins, etc. contain nitrogen. इससे भी बहुत ज़्यादा आयंस है जो इसमें नाइट्रोजन सोर्स में अवेलेबल है. Hence the organisms need availability of the suitable source of the nitrogen in nutritional. They can use the both organic as well as the inorganic nitrogenous compounds of the meat that the requirement of the nitrogens. इसमें भी दो कंपाउंड यूज होते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड. Almost any organic nitrogen can be used by the microorganisms. Again 1 marks question कि almost organic
नाइट्रोजन है वो इसमें ज़्यादा ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं. सम प्रोकैरियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशंस ऑर्गेनिज्म कैन also use molecular nitrogen by the converting in ammonia. Next, requirement for sulfur and phosphorus. Sulfur is a important component of the different biological important molecules of the cell, such as the sulfur containing ammonia acid like the crystalline and methionine, vitamin like biotin and creatine coenzymes. Again 1 marks questions. Similarly, phosphorus is also important components of the creatine cell components such as the nucleic acid, ATP, phospholipid acid. ये सब आपको 1 मार्क्स में पूछा सकते हैं कि सल्फर कंपाउंड्स में थे क्या बनता है, उसमें से क्या आपको मतलब ATP जनरेट होके क्या मिल सकता है. Sulfur can be supplied to organism as a organic sulfur, sulfide, sulfalite and sulfate as well as the elements. इसका अलग अलग elements हैं. Similarly, phototrophs may be supplied to organism as a phosphate set, ammonium phosphate and sodium phosphate. Again 1 marks question. इसको भी 2 question 1 marks में हो सकते हैं. Next, requirement for metal science. Metal science like K plus, Ca plus, Mg plus, Fe plus etc. बहुत सारी मेटल साइंस है जो रिक्वायरमेंट फॉर मेटल साइंस में यूज होती है आर द रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर अ नॉर्मल ग्रोथ. अदर एलिमेंट लाइक Zn plus, Cu plus, Mn plus, CO, Na plus and Ba plus etc. are also required the trace amounts. ये trace amount but बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है लेकिन अमाउंट मात्रा में यूज़ हो सकती है ये मेटल साइंस. ये मेटल साइंस का क्वेश्चन 1 मार्क्स में यानी 2 मार्क्स में होगा. These metals ion act in different way in the cell, act as a component of cell molecular or factor for the enzyme activity during the metabolisms. These elements are usually available as a contaminants of other compounds used in the preparations of media or may be supplied as a corresponding cell. Sodium Na plus is not required a high concentrations by all organisms. Again 1 marks questions. However, halophilic bacteria, cyanobacteria and photosynthetic bacteria do require the high concentrations of sodium chlorides. ये भी 1 marks का क्वेश्चन है. ये बैक्टीरियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बैक्टीरियल्स जो है न्यूट्रिशनल इसमें थे बहुत ज़्यादा 1 मार्क्स के क्वेश्चन है. एक पॉइंट में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पूरी का पूरा अच्छे से आप प्रिफर करें. Requirement for vitamins and vitaminized substance. Vitamins and their derivative function of the coenzymes. Those bacteria which are unable to synthesize them require that the extra supplement in the nutritionals. Again 1 marks questions जिसमें से extra supplements मिलता है nutrients में. In such the instant they are said the growth factors. The organisms which require the growth factor are said the fastidious organisms. फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? जो न्यूट्रिएंट्स है ये पर्टिकुलर्स उनका ही यूज करते हैं, दूसरा कोई न्यूट्रिएंट्स का यूज करते नहीं है, उसको बोलते हैं फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स. दे कैन नॉट ग्रो विदाउट ग्रोथ फैक्टर्स. ये ग्रोथ फैक्टर के बिना ग्रोथ हो सकते नहीं. लास्ट, रिक्वायरमेंट फॉर द वाटर. Water is indissoluble of microbial nutritional due to various reasons. Water is major component of the cell. About the 70 to 80% of the cell's component consist of water. It dissolves most of the nutrients so that they can be absorbable by the microorganisms. Water is also initials for many enzymatic reactions including the hydrolytic reactions. Again 1 marks questions कि enzymatic reaction including किसके साथ करता है? हाइड्रोक्लोरिक रिएक्शन के साथ. Water process higher specificity heat. This protects organism from the
ट्रांसलेट फंक्शनलिजेशंस इन टेम्परेचर्स। आप सभी को कुछ भी समझ में ना आए तो मेरा नंबर सभी के पास है, मुझे मैसेज करके यानी कि कॉल करके अब सब लोग मुझे पूछ सकते हैं जिसमें समझ ना आ सके। थैंक यू, मिलेगी अगले